Okay, what do you guys all already know about archival? Archiving means collecting a multiple files और डाटा को मतलब स्टोर करना सर एक स्ट्रक्चर में, हम्म या हम बोल सकते हैं जस्ट अ ग्रुप ऑफ फाइल्स टुगेदर। हम आर्काइव कब करते हैं डेटा को? सर जब हमें उसे बहुत कम रिट्रीव करना हो। हम्म तो जनरली आर्काइविंग इज अ कंसेप्ट जहाँ पर टिपिकली हमारे पास जैसे ईमेल बॉक्सेस होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो जब हमारा ईमेल बॉक्स काफी भर जाता है तो हम उसके ईमेल्स को आर्काइव कर देते हैं। मींस हम डेटा को डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक ऐसी लोकेशन पे मूव कर रहे हैं जहां से उसको रिट्रीव करने में हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, बट वो आपके एक्टिव स्टोरेज स्पेस से हट जाता है। ओके, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक बहुत कॉमन प्रोसीजर होता है, जब आपके पास बहुत सारे लॉग्स बन गए हैं, बहुत सारा डेटा जनरेट हो गया है, तो जो हमारा एक्टिव सर्वर है जिसमें हमारा एक्चुअली सर्विसेज चल रही हैं, वी डोंट वांट टू बर्डन दैट सर्वर दैट मच, राइट? तो अर्लियर टाइम्स के अंदर वी यूज्ड टू हैव टेप ड्राइव्स। तो अगर आपने किसी ने देखा हो रेडियो कैसेट या फिर मैग्नेटिक टेप वाली ड्राइव्स, मे बी मूवीज में देखी हो, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन देम रिसेंटली और नॉट। सो उन टेप ड्राइव्स के अंदर एक मैग्नेटिक टेप होता है जिसके अंदर आप सारा डेटा स्टोर कर सकते हो। एडवांटेज उनका ये है कि उसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रख सकते थे विद वेरी गुड लाइफ, ओके, एंड वेरी गुड कॉस्ट ऑल्सो। गुड कॉस्ट का मतलब दैट यू डोंट नीड टू रियली स्पेंड अ लॉट ऑन देम एज कंपेयर टू योर हार्ड डिस्क एज सच। तो वहीं से टेप आर्काइवल एक वर्ड आया, और वहीं से जो लिनक्स की मेन कमांड है टार, ओके, तो वो कमांड आती है। सो टार इज द कमांड दैट वी यूज इन लिनक्स टू मेक एन आर्काइव। नाउ आर्काइवल में क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली, हम एक डायरेक्टरी को आर्काइव कर सकते हैं, नंबर ऑफ फाइल्स को आर्काइव कर सकते हैं। तो बेसिकली द टार कमांड विल टेक ऑल ऑफ देम and put them into a single file, okay, so that then you can move that file to a different location. Advantage इसका ये है कि आप फाइल को वन बाय वन मूव नहीं कर रहे हो, okay, so you are moving them in one go, so that becomes easier, there are less chances of error and so on. Further, we had something called compression also. So when we are creating these archive files, we also want to compress them further. So what is the advantage of compression? किसी लार्ज फाइल के डाटा को हम स्मॉल अमाउंट में कंप्रेस कर सकते हैं, स्मॉल साइज में कंप्रेस कर सकते हैं। हमारे पास सपोज 100 GB का डेटा है, हम उसको कंप्रेस करते हैं तो हो सकता है वो 60 GB का रह जाए या 50 GB का रह जाए। तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू मूव इट, इट विल बी इजियर फॉर अस टू स्टोर इट। जहां पर भी स्टोर कर रहे हैं वहां पर भी लेस स्पेस ले रहा है। ऑब्वियसली सबका मतलब क्या है कि जब उसको हम रिट्रीव करने जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। जब भी आप आर्काइवल करते हो तो आप उसके अंदर टाइम का सिंटेक्स, टाइम और डेट, सर्वर का नाम, सो बेसिकली देयर विल बी अ स्ट्रक्चर ऑफ योर फाइल दैट यू विल क्रिएट, ओके, सो दैट टुमारो व्हेन यू विल हैव टू रिट्रीव इट, तो हो सकता है आज से 5 साल बाद कोई बोले यार मुझे तो 31 अगस्त 25 की या 25 अगस्त 25 को जो 11 AM पे कॉल हुई थी, आई वांट टू सी द लॉग्स फॉर दैट डे, दैट 1 hour, right? So you should be able to retrieve it. So basically the nomenclature of files, the way you store the files, all those things will become very important. आज obviously we have got too many tools to store the data. आज हमारे पास cloud के अंदर storage है, data centers हैं, तो maybe we will not use a tape archive. We might use some other methods. But again, our nomenclature and how we keep the data will be very important for the retrieval. Okay. So I will just quickly show it to you. So let's go ahead there. So CBF, तो CBF के अंदर हम यहाँ पे जब F देते हैं तो उसके बाद हमें फाइल का नाम देना होता है. So I can write say 11 August. I can write 3 PM and I cannot touch tar. Right? इसके बाद मुझे फाइल के नेम देने होंगे. So I can write like this.
right? So these three are created. Now if I do ls -ltr, so you will find that this tar is created. Okay. Yes, sir. Now I can delete the old files that I wanted that जिनका मैं tar किया है. Now, as I told you that there is a point of compression also. So now I can even compress it. So compression जो हम normally Windows में करते हैं वो zip करते हैं हम, right? आपने WinRAR का नाम सुना होगा, वही करते हैं. Linux के अंदर by default we get two compression. One is called gunzip. तो gunzip से compress करने के लिए we just simply add this command. Okay? यहाँ पे हमें दूसरी फाइल का नाम भी देना नहीं पड़ता. You can just simply write it. And we will, you see that here the size of file was 10240. Now it has become 608. Okay. And the same file has been renamed to tar.gz. Okay. Yes, sir. One more thing is that I can do the same thing in one go also. तो normally यहाँ पर हम इसको tgz बोलते हैं और यहाँ पर हम z लगा देंगे. तो देखो एक और फाइल बन गई है, सेम चीज बनी है, इसमें थोड़ा कंप्रेशन मुझे एक्स्ट्रा मिल गया, बट अब मेरा सिंगल स्टेप प्रोसेस है ये, राइट? So in a single step I was able to create my tgz file. So I have done archival also, and I have also been able to what you say, compress it. Okay. Now just to test it, I can create a directory. सर इसमें टार की जगह आपने tgz दिया ना? वो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन तो मैंने, हम लोग जनरली एक नॉमेनक्लेचर बना हुआ है कि हम tgz देते हैं. मैंने पहले ही बताया हुआ है, लिनक्स में एक्सटेंशंस डजंट मैटर. Okay. They are more for us as humans to identify what kind of files are these. आप चाहो कोई भी एक्सटेंशन दे सकते हो, बट टार के केस में जनरली दिस इज अ नॉमेनक्लेचर. तो हम जब हम पहली फाइल बनाते हैं, अगर हम टार फाइल बनाएंगे तो हम उसको डॉट टार बोल देते हैं, और अगर हम उसको गनजिप करते हैं तो उसको हम tar डॉट gz बोलते हैं. अगर हम वन गो में एक फाइल बनाते हैं तो उसको हम tgz बोल देते हैं. Okay, sir. राइट. तो मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है. आई विल मूव, सो बेसिकली आई विल मूव दिस, से फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट टू टेस्ट फॉर टार. तो मैं यहाँ पे गया, फिर राइट यहाँ पे भी एक फाइल बनी हुई है. अब मैं इसको अनजिप करूंगा पहले. तो गनजिप, उसके लिए कमांड होती है गनजिप, राइट, जस्ट द फाइल नेम. यहाँ पे देखो टार मिल गया, और टार को अनटार करने के लिए आप सी की जगह लगाते हो एक्सट्रैक्ट, राइट, और यहाँ पे xvf, तो आपको ये सारी फाइल मिल गई, राइट. सेम थिंग आई कैन डू विथ, अब मैं यहाँ पे rm-rf स्टार कर रहा हूँ जिससे कि सारी फाइल डिलीट हो जाए. अब मैं जो आपकी tgz फाइल थी वो लेके आऊंगा यहाँ पर, राइट. इसको वन गो में अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, xzvf और यहाँ पे फाइल का नाम, राइट. सो दोनों तरीके पॉसिबल हैं. आप वन गे में कर सकते हो, अलग गो में कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन लिनक्स जनरली आप जिप भी यूज कर सकते हो. इट इज नॉट लाइक जिप इज नॉट अवेलेबल, तो जिप इज अवेलेबल, बट जो लिनक्स का ट्रेडिशनल लिंगो है उसमें होता है जिप आपको सिस्टम पे ना मिले, राइट, बट गनजिप मिलेगा. ऐसी एक बनजिप भी होता है जिसके अंदर आप bzip यूज करते हो और j यूज करते हो अगर आपको वन गो में करना है तो, और उसको बनजिप 2 बोलते हैं. और एक और होता है, राइट, तो आप पीपीटी में पढ़ सकते हो उसको कि व्हाट ऑल कंप्रेशंस आर अवेलेबल, but normally this gunzip is very popular, right. Now we come to another topic, and that is called transfer of files, right. तो उसके लिए बेसिकली 3 कमांड्स है हमारे पास. एक होती है SCP, एक होती है SFTP, और एक होती है rsync. Okay, so these are the 3 commands that we have. Now SCP command is like a copy, जैसे CP command होती है, same thing, right, but it is a secure copy. SCP command आपका SSH प्रोटोकॉल यूज करती है to copy the files. Now मेरे पास currently single Linux system है, right. Just to showcase to you, suppose ये वाली फाइल मेरे पास इस वाले फोल्डर में पड़ी हुई है. तो suppose I want to send it to some other folder, say
मेरे सिस्टम पे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ रूट फोल्डर and I will say I will create a directory over here, dir. Okay, so I have just created a directory to show it to you. It's an empty directory right now. Now suppose I want to send this file to my this directory. Now assume this for a moment that this is a remote system. Okay, so what I will do is I will add SCP. I will give the name of the file, right? And now instead of simply adding the path to the destination, because it's a remote system, I will write the remote username, remote IP address, or the host name. My bad. And the path. Right? Now my system will actually, because I am on the same system, it has not asked me again, but otherwise it would have asked me the password for this system, right? So for remote machines, you will use this syntax. Remote username, remote IP address or host name, colon, followed by the path. Okay? Yes, sir. Right? Similarly, if I have to bring some other file from there, okay? So suppose I create a file on that particular path, reverse scp.txt, right? So you see there is no file over here in the current directory. ऐसी कोई फाइल नहीं है. तो अगर मुझे वहां से वो फाइल लेके आनी है, right? तो I first thing I want to know the path of that file. तो मुझे whenever I am using SCP command, I need to know the complete path of the file at the remote location. Okay, I cannot do anything else otherwise. Again, because it's a remote machine, the remote IP, host name, remote username, remote IP or host name, colon, and path, and then the current, the where I want to bring the file. So either I can place dot or I can even write the path. So, right. So this has come now. Okay. Yes, sir. So only catch with reverse SCP is, or SCP is, so this is a reverse SCP, like bringing the files from somewhere else and all sending the file to somewhere else. But this can only work when you know the exact path at both locations. Otherwise, you cannot use the SCP command.